वर्तमान शिक्षा में इन्वेंशन, इनोवेशन, इंटेलिजेंस और इम्प्लीमेंटेशन जैसी आर्टिफिशियल स्किल्स का अभाव है। इसलिए देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ी हुई है। उपरोक्त स्किल्स की कमियों को दूर करने के लिए हमने इन्वेंशन प्रमोशन बोर्ड छत्तीसगढ़ का गठन किया है। हम उपरोक्त स्किल्स की जागरूकता लाने के लिए वर्कशॉप, सेमिनार और प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। 1 सितंबर 2025 को दोपहर 2 बजे एंजल वैली स्कूल, भिलाई में करियर एंड बिहेवियर स्टडी के लिए एआई स्किल्स विषय पर कार्यशाला प्रस्तावित है। हम सभी इंटेलेक्चुअल्स को कार्यशाला में भाग लेने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्किल्स ट्रेनिंग के लिए आमंत्रित करते हैं। कार्यशाला में भाग लेने के लिए कृपया स्कूल के रिसेप्शन ऑफिस से संपर्क करें। 21वीं सदी में प्रोफेसर महाजन ने नए व्यवसायों के लिए निम्नलिखित एआई स्किल्स डेवलप की है। 1. स्मार्ट ज्योमेट्री एआई स्किल से अंतरिक्ष में ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन निर्धारित करना। 2. करियर और बिहेवियर एनालिसिस के लिए लाइफलाइन लूडो उपकरण। 3. ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी असेसमेंट। और 4. मिसलेनियस प्रॉब्लम सॉल्विंग। उपरोक्त सभी एआई स्किल्स नए रोजगार के अवसर और उपकरण प्रदान करते हैं। एआई स्किल्स डेवलपमेंट की फाउंडेशन डॉक्टर महाजन के टेक्निकल पेपर जर्नल एएससी 1973 में प्रकाशन के साथ शुरू हुई। शोधकर्ताओं और रिसर्च गाइड्स को अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स को साझा करने के लिए शिक्षा की आकर्षक दुनिया में academia.edu अत्याधुनिक मंच है। वर्तमान चर्चा में डॉक्टर संतोष के महाजन के शोध योगदान को उजागर किया है, क्योंकि शिक्षा के अल्मा मैटर में उनके प्रशंसकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रोफेसर महाजन ने 1973 में रिप्यूटेड इंटरनेशनल जर्नल अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स ASCE सर्वेइंग एंड मैपिंग डिवीजन में पेपर प्रकाशित किया, जिसमें 3D मॉडल बनाने के लिए इमेज ओवरलैपिंग फोटोग्राफ्स के उपयोग की विधि एक्सप्लेन की है। प्रोफेसर महाजन द्वारा 3D मॉडल को विकसित करने में अपनाए गणितीय एल्गोरिदम से अंतरिक्ष में ऑब्जेक्ट्स की ग्लोबल पोजिशनिंग के नए मार्ग खोल दिए हैं। फोटोग्रामेट्री में विकसित 3D मॉडल से जमीनी नक्शे और इंजीनियरिंग लेआउट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की इमेज कैप्चर की जाती है। academia.edu द्वारा जारी वीडियो में ऑब्जेक्ट्स की ग्लोबल पोजिशनिंग और एआई तकनीक के विकास में प्रोफेसर महाजन के शोध कार्यों की उपयोगिता का उल्लेख है। Depth with Academia, where we dig deep into cutting-edge research and academic discussions. I'm Richard Price, your host and guide through this world of fascinating insights and stories from academia. Today, we're diving into a paper authored by the accomplished Santosh K. Mahajan titled Absolute Orientation of Photogrammetric Models. Photogrammetry. It sounds like one of those fields that maybe not everyone is super familiar with, right? But bear with me. Imagine capturing images and then using those images to measure and map the world. That's exactly what photogrammetry does, friends. And Mahajan's paper brings some exciting twists to the field, raising intriguing questions about the methods we use to accurately determine spatial information from photographic data. So let's talk about the core question. The paper tackles, why is absolute orientation in photogrammetry significant to us? Well, in simple terms, we're looking at aligning a photographic model to the real-world coordinates. It's about calibrating the images in such a way that they reflect reality as precisely as possible. This has huge implications, particularly in fields like surveying, engineering, and perhaps even archaeology, where precision can make all the difference, right? Now, onto some key findings from Mahajan's work. This paper uses a unique method, something Mahajan suggests to initially approximate space coordinates from 3 photo coordinates. Sounds a bit technical. Let's break it down. Essentially, Mahajan provides a foundational step to calculate changes in space vectors. Now, without getting too deep in the mathematical weeds, we could end up spending hours doing that. Let's just say this approach sets up a solid platform for improving accuracy in the models. We should note that Mahajan's method assumes an orthogonal system for ground values. What does that mean for us, you ask? It's about using a system of perpendicular lines, essentially helping to simplify complex mathematical computations.
This is something engineers, surveyors, basically anyone dealing with space and measurement would find immensely beneficial. But here's the cool part. The paper doesn't presume absolute truth. Nope. It offers insights and invites us to explore and apply these ideas, but wields a considerate reminder that academic research is all about exploration. Mahajan's work is a platform for further inquiry rather than the last word on the subject. That being said, it's vital to understand that while the model setup and recalibration techniques Mahajan proposes are theoretically robust, the actual application in the field might still demand adjustments due to various environmental factors. After all, there's a huge difference between theory and practice, right? Oh, speaking of environment, did I mention how much I love the idea of applying photogrammetry to archaeology? For instance, imagine unearthing ancient ruins and using precise images to construct a 3D model that mirrors historical landmarks exactly as they were. It's like stepping into a time machine. Maybe that's why I find these tech applications so fascinating. Okay, where was I? Oh, right, Mahajan's framework. These insights from Mahajan could potentially revolutionize how accurately we can model physical spaces, enabling more precise measurements and consequently opening doors to more innovative applications. And let's not forget the collaborative nature of this research. It encourages ongoing dialogue with fellow academics and professionals, and that's crucial in advancing collective knowledge. Before we wrap up today, remind yourselves that scientific papers like this play a huge role in advancing our understanding, but are by no means the final answer. Each paper is a prompt for further exploration, offering stepping stones into new knowledge, the ideal place for curious minds to jump off into deeper discovery. So there you have it, the fascinating world of photogrammetry through the lens of Santosh K. Mahajan's research. As we close, remember to keep questioning, keep exploring, and most importantly, keep enjoying the journey through academia with curiosity and an open mind. Thank you for tuning in to In Depth with Academia. I'm Richard Price.